about this lesson, the mystery of missing cap. Is it audible, Mr. Chakradhar? Is it live and audible? See, open korchu pra. Unit 1 from mystery of missing cap. Whenever you are studying the story, you must be very much careful about the character, the plots, the incidents, and the timings. चारटा जिनस ऊपर फोकस करिवो. Person, place, event, okay, and the time when the event is taking place. जब भी स्टोरी पढ़ुले किए तार कैरेक्टर अच्छी कार रोल कौन होची आई ऊपर बहुत फोकस करिया पड़ियो. राइट. देखो इन द बैकग्राउंड रे I have told you this is written by Manoj Das. Who is the narrator here? Manoj Das is a writer of Odisha. The lesson itself says mystery. Mystery means secret. Something secret. What is secret? See the title, missing cap. So whose cap is missed here? How is it missed? And how it was discovered in the end? किमती हजिला तार कैप गोटे मंत्री रो कैप हज जाइथिबो किमती हजिला तापर ताको किमती खोजी के बाहर करा गला ए पछरे थिबा इंटरेस्टिंग कथा कोन हाउ इट इज लाफेबल आई क्रिएट से कोची मनोज दास आई वांट टू क्रिएट ए लाफ इन यू सो आई हैव रिटन दिस बोलिक से कोची सो इट इज मेन कैरेक्टर होची श्री महाराणा सेकंड कैरेक्टर होची बाबू वीर किशोर. बाबू वीर किशोर होची मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड फाइन आर्ट. कोट मिनिस्ट्री से मिनिस्टर ऑफ फिशरी एंड फाइन आर्ट से इट डिस्क्राइब करछि फर्स्ट श्री महाराणा विषय रे. आई हैव कंप्लीटेड इट. द श्री महाराणा वाज ए वेल टू डू मैन. दैट्स मैन well-to-do man. Well-to-do man means rich and wealthy man. He is having all these properties and whatever things required for the life, for the maintenance, he is sufficient. Getting. So who are the well-to-do men? Open the book and page 38-39 of English 2. Go through the lines. I am reading. Just see. Sri Maharana was a well-to-do man. He had only pakka house in around 20 villages. पाखपाखी आखपाख जतरा 20टा विलेज रे तार जनकर का पक्का हाउस थिला. आ से हाउस को वेल पेंटेड करके डेकोरेट करके रखिथिला जो टूरिस्ट माने भी सेबाट गले कुछ समय सिटी रही करी तार बिल्डिंग को देखिबा को बाध्य होतले. सो अट्रैक्टिव इट वाज. It was the story during the period of independence. स्वाधीनता समय रो कथा. हेले हमको फर्स्ट थिंग को फोकस करिया पड़िबो जे वेल टू डू मैन बोली ता कहबार अर्थ 20 खंड विलेज रे तार जनकर का पक्का हाउस थिला. नंबर 1 he has two ponds full of fish. तार प्रॉपर्टी विषय रे कहै वेल टू डू मैन केमती लास्ट टाइम तुम करथिलो. and he had many cows. एतिके हमें पढ़ला परे then comes the independence period आइला बेलकू इंडिया रो caste विषय से कहथिला. the Indian society have 4 castes. We all know this. Brahmin, Vaishnav, consider Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. During the independence time, along with these 4 castes, ए 4टा caste सहित गोटे नया caste राइज होइतिला. से caste ना कोन कहथिला से patriots. And these patriots are happen to be
The rich people, sorry, people who love the nation, having high nationalistic feeling people are known as patriots. इठी से patriot बोल के का को संबोधन करछि बेले फ्रीडम फाइटर मन से समय स्वाधीनता आंदोलन चलतला ना एमाने गोटे ग्रुप हे करी गोटे नवा गोष्ठी भलिया करथिले ताकू से कर देला फिफ्थ कैस्ट बोल एति जाय हम पढथिले इंडिपेंडेंस टाइम रे द फिफ्थ कैस्ट इज द कैस्ट ऑफ पेट्रियट्स. पेट्रियट्स बोले देशभक्त मानकर गोटे ग्रुप. तापर कोन अछि चलो देखिबा. नाउ इट इज द बिगिनिंग फॉर अस. Going through the line, it was observed that small fishery of Sri Maharana were often exercised, used, tarartha, in the honor of new people. तार जो फिशरी थिला डेटा पॉन्ड थिला डेटा पॉन्ड रे से फिश स्टोर करके रखिथिला. न्यू पीपल जुठु भी आसीबे गेस्ट मानक भलिया से मानक से फिशेस सर्व करके दोथला. तेणु कर तुमको फास्ट गोटे जिनस थिला ही वाज मोर रेपुटेड एंड कॉन्सेंशियस एंड जेनरियस पर्सन बोल के ऊपर फर्स्ट लाइन अछि देखो. काहे ही वाज मोर कॉन्सेंशियस एंड जेनरियस बोले he was helping the people. जो माने भी न्यू कमर्स आस्तले से मानन तार फिश एंड ताको रहबा पई अरेंजमेंट ए प्रकार टिके सोशल सर्विस भी करतला के श्री महाराणा. श्री महाराणा इज द मेन character of this lesson. And observers means the outsiders who comes. जो माने बाहर आस्तले बाहर गार लोक माने से मानन को observers को जाउछ. The observers began to notice Sri Maharana himself was fast becoming a patriot. Patriot, देशभक्त. Patriot तो 5th class start हेतला caste टाइम भितरे श्री महाराणा टॉप रे थिला से गोटे पेट्रियट हेतिला देशभक्त बोल के जना पड़ला. कुट्रू फ्रॉम हिज सर्विस टू पीपल. हु आर द पीपल? द न्यू कमर हु कम्स टू द विलेज. जो माने भी विलेज को आस्तले. एज आई फाउंड आउट लेटर इठी आई बोले किए ऑथर. ऑथर होची मनोज दास. से कहूँ आई फाउंड आउट लेटर ये एते सब जेनेरियस अच्छी समस्त को हेल्प करची. आउटसाइडर जो मैंने आसुचंती से मानन को मध्य सर्विस दोची. आर उद्देश्य कौन बोल कि ये परे जानला. LATER लेटर मींस परवर्ती समय रे. He had even nurtured the ambition to become the member of state legislature. तार एम्बिशन जना पड़ला जे काई कि एमती करची बोला को तार गोटे टारगेट थिला जे ही वांट टू बी एन MLA मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली. तार मुख्य उद्देश्य एटा देखो स्टोरी रो बिगिनिंग माने कौन लक्ष्य को लेकर स्टोरी आरंभ होईची एटा. हेले ये सब उद्यम गोटे विषय पाई जे से निजे गोटे MLA हवा को चाहूचे. व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ श्री महाराणा? टू बिकम द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली बोले MLA. The incident I now relate. I इट जथर आइला से ऑथर को बुझौची मनोज दास. मनोज दास कौन करची श्री महाराणा को डिस्टेंस रे ऑब्जर्व करची. तार कार्यक्रम कौन से कौन पाई ये सब जाक करची बोलिवा जिंस से ऑब्जर्व करची. तेणु करी से इठ कहूची जे the incident I now relate occurred at the outset of his endeavor in that direction. I witnessed the incident as a small boy. सतोल से छोट पिला थिला के मनोज दास से छोट बलरू आको ऑब्जर्व करची श्री महाराणा केमति क्या लोको and what he is doing. So Sri Maharana is doing all these things only one aim, he want to be the MLA. So in my maternal uncle's house, which I frequently visited, being just near Sri Maharana's, when I narrate it, I do so naturally with the understanding which has matured in me with time. बोले फ्रॉम चाइल्डहुड मु पिला बलरू ऑब्जर्वेशन को रखिछि श्री महाराणा जे श्री महाराणा
आमर तार मैटरनाल अंकल कार मनोज दास मैटरनाल अंकल बोले माँ को भाई अंकल जो गाँव में रोचंती से गाँव में ये रोला किए श्री महाराणा हेले मनोज दास ऑथर कौन करे से गाँव को बुली जाए था बुली गला बेलू तार नजर सब पड़ुए श्री महाराणा उपर ये कौन कर कौन ना बोल ये गोटे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थिला बोल हेले से दुईटा जिनस ये ऑब्जर्व कला कौन नंबर वन ही इज हेल्पिंग ऑल अदर पीपल्स the newcomers who come to the village and number two why he is doing all these things बोल के देखिला बेलू he had an ambition the ambition to become an MLA तो ये स्टोरी एमती अच्छी जे से समय रे से गोटे एमएलए हवा पाई हेले आ गोटे को मंत्री रो नले को पॉलिटिकल लीडर रो टिके हेल्प नेला बेले से मध्ये फेमस हो जिवो तापर इलेक्शन रे जति एमएलए हो जिवो एटा तार उद्देश्य तार एम होची एटा तो से से कौन कला देखो इन दोज अर्ली डेज ऑफ स्वदेशी मिनिस्ट्रीज जो मंत्री मन को स्वदेशी मिनिस्ट्रीज कह जाता देयर वेर नो डेपुटी और सब डेपुटी मिनिस्टर्स एटा इंडिपेंडेंस समय कथा तेणुक से समय रे मिनिस्टर पोस्ट को बड़ रेस्पेक्टेड पोस्ट बोल गणा जाउथला आ से समय रे मंत्री माने डेपुटी मिनिस्टर सब मिनिस्टर इनती तल को पोस्ट नथिला जदि मंत्री थिला बेले से फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर थिला फुल पावर भी तार थिला स्वाधीनता समय आज सीना आम मंत्री मन को किए पचारने आज कौन हजार हजार मंत्री भाया भर्ती जाते किए कड़े किस करम किसी नजर नुह कि दैट टाइम इंडिपेंडेंस टाइम रे बिकमिंग ए मिनिस्टर मीन्स इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट बोल फिल करते आ समस्त मंत्री बोले जाकि देखा जाते लोक मैंने कहीं केमती लोक कौन हो से कौन खाऊ से केमती रोथो दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स वेर देयर सो ऑल वेर फुल फ्लेज्ड ऑनरेबल मिनिस्टर फुल फ्लेज्ड से मानते आ सब डेपुटी एमती किसी चिन्ह नथिला माने पोस्ट नथिला से समय हेले ये जो मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर कथा कहूँ सी हूँ किए बाबू वीर किशोर व्हाट आर द नेम ऑफ द मिनिस्टर बाबू वीर किशोर हु हेल्ड द पोर्टफोलियो बोले कौन पोस्ट पोर्टफोलियो बोले पोस्ट ऑफ फिशरी एंड फाइन आर्ट को पोस्ट से थिला फिशरी एंड फाइन आर्ट हेले एबे श्री महाराणा लक्ष्य कौन सी जदि गोटे नेता हम गोटे एमएलए हबार बोले आउ कहले मंत्री रो साहाଯ୍य ये पॉपुलर हो चाहूँगी तो ये सिलेक्ट कला तांको लोकल एरिया रो बाबू वीर किशोर को से वीर किशोर गोटे बड़ नोटेड मिनिस्टर थिला तेणु ताकू धरिकी ता माध्यम रे ये केमती राजनैतिक रंगमंच रे निजर पोजिशन को तैयारी करिवो कैरियर को तैयारी करिवो एज ए पॉलिटिशियन सब चेष्टा तार सेठी चलछि हेल फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट तांको डिस्ट्रिक्ट रो से मिनिस्टर थिला के बाबू वीर किशोर द स्पॉन्सर ऑफ श्री महाराणा थॉट इज प्रॉपर दैट ही इज इनटू पॉलिटिक्स डिबेट वाले न्यूली एंट्री नुआरे कौन से काम जने करिवो प्रवेश होथबो नुआरे बोले ताको डिबेट बोलबे डिबेट इनटू पॉलिटिक्स प्रथमे पॉलिटिक्स रे एंट्री करबा को हेले से कार हेले सहारा नबार छी तो से इटी बोलची शुड हैव द ब्लेसिंग ऑफ बाबू वीर किशोर तो से कार ब्लेसिंग रे ऊपर को उठ जावा पई चाहूची मंत्री बाबू वीर किशोर हेले आमे तार एम जानले आ तार ऑब्जेक्टिव मध्ये जानले ये सब छोटपट श्री महाराणा कौन पाई होची बोले तार एग्जिस्टिंग मिनिस्टर होची बाबू वीर किशोर आ से लोकल रो से होची फेमस मंत्री जदि ता सहित मिलामिशा करके तार फेवर जदि जीति जाई पारिबो तार ब्लेसिंग जदि ये पाई जिवो ताले कौन हबो ये मध्ये धीरे धीरे पॉपुलर एंड फेमस हो जिवो नेक्स्ट ये एमएलए हवा पाई बोल के आपको रास्ता क्लियर हो जिवो एथि पाई बोल से कौन करिवो से मंत्री को प्लीज करबा पाई गोटे रिसेप्शन कमिटी अरेंज करिवो गोटे पब्लिक मीटिंग वाला अरेंज करिवो
ताकू ताइरे से चीफ गेस्ट डाकिबा पाए बोल कि कौन सब प्रिपरेशन करछि सेटा हमको नेक्स्ट पैराग्राफ रे आइबो ये सब तार राजनैतिक एम को फुलफिल करने पाई श्री महाराणा ये सब काम करछि ओके तो से कौन मीटिंग अरेंज करछि से विषय देखिबा आ केमती प्रिपरेशन हेछि सेटा नेक्स्ट पैराग्राफ रे आइबो In those days, a minister's daily life was largely made of speech making at public receptions. से समय मंत्री मानकर मुख्य कार्य कौन बोले वक्तृता दबाटा मीटिंग्स मन को अटेंड करवा चीफ गेस्ट हवा भाषण दबा ये सब काम रे मंत्री मन से समय बहुत लिप्त रहते मीन्स एंगेज्ड सो इन दोज डेज तांकर डेली लाइफ रो मेन काम कौन थिला स्पीच मेकिंग कोठी इन पब्लिक रिसेप्शंस मीन्स पब्लिक मीटिंग गुड़ा करे A reception was arranged for Babu Veer Kishore with Sri Maharana as the chairman of the reception committee. Okay, एबे श्री महाराणा कौन करछि गोटे रिसेप्शन कमिटी रे गोटे पब्लिक मीटिंग अरेंजमेंट करिया पई चाहछि से कमिटी रो चेयरमैन किए छि से निजे छि के श्री महाराणा एंड एज ए चेयरमैन वीर किशोर को से चीफ गेस्ट हिसाब रे इनवाइट करिवो रिसेप्शन कमिटी को आ तार लक्ष्य से साधन करिवो लक्ष्य कोन टू बिकम एन एमएलए अवार्ड हेल्किन किन अरेंजमेंट करछि से देखो श्री महाराणास ह्यूज एंसेस्टरल माने तांकर पूर्व पुरुष फोर फादर्स पूर्व पुरुष मानकर can chair which was laid with a nylon cover से केबे की तांकर गोदाम रे पड़थिबा पूर्व पुरुष मानकर गोटे बड़ वीआईपी चेयर थिला कैन चेयर बोलबेटा से चेयर को काटी की तारे नायलॉन कपड़ा रे गोटे कवर दिया हेतिला सेटा को खुजी के बाहर कला काई की मंत्री आसले बसिबे रिसेप्शन कमिटी रे पब्लिक मीटिंग जेतोल हबो ता पाई बोल की चेयर अरेंजमेंट कला upon which the best village seamsters बोले weavers जो माने लुगा बुनाते मानसु विलेज रो तांकर seamsters has laced माने बुनी बाटा बुनी चंती a pair of herons बोले गोटे प्रकार बग प्रजाति रो पक्षी बोले से जो कवर ताको दिया है चेयर ऊपर जो नायलॉन कपड़ा पड़ची से कपड़ा ऊपर थिबा चित्र विषय से कहूची ताको एमती डिजाइन करची दुईटा बग जातीय पक्षी ताको हेरन बोलबे तांकर बीक बोले कोन थंट रे दुईटा माछ धरला वाला चित्र अंका जायछि प्लेस्ड बोले एंड इट लुक्स वेरी gorgeous what that ancestral chair तो फर्स्ट थिंक बाबू वीर किशोर पाई से चेयर अरेंजमेंट करवा विषय रे आसला से चेयर ता की चेयर एंसेस्टरियल माने तांको पूर्व पुरुष मान को समय रु तांको घर को जे भी गेस्ट आसो किंबा गां को जे भी बड़ लोक आसो से चेयर ता से मान पकोतले से चेयर विषय रे से डिस्क्रिप्शन दला जे इट इज कवर्ड विथ नायलॉन क्लॉथ एंड अपॉन व्हिच जा ऊपर की तांको विलेज रो बेस्ट बुनाली माने सेमस्टार्स मींस बेस्ट वीवर्स had laced a pair of heroin pair माने कोन दीटा पक्षी with two big fish in the beak बोले थंटर धरला वाला चित्र अछि अट्रैक्ट करिया पे तापर एटा चेयर अरेंजमेंट हे गेला आमे पड़ते से पब्लिक मीटिंग पाई कोन अरेंज करछे फर्स्ट अरेंजमेंट चेयर सेकंड अरेंजमेंट देखो फॉर ए फोर्टनाइट बोले 14 days 14 दिन को 2 weeks को फोर्टनाइट बोले फॉर ए फोर्टनाइट एवरी डे द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लोअर प्राइमरी स्कूल डिवोटेड देयर आफ्टरनून टू द प्रैक्टिस ऑफ वेलकम सॉन्ग सेकंड स्टेप है वेलकम सॉन्ग चेयर अरेंजमेंट सरला परे श्री महाराणा कौन कला मंत्री जदि आसवे मिनिस्टर विल कम द मीटिंग विल स्टार्ट एंड ओपनिंग सॉन्ग गोटे गाई के तांको वेलकम करिवार वेलकम सॉन्ग
ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି ତମର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଇକି ୱେଲକମ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ। ହେଲେ ଏଠି ସେ କାହାକୁ ଏନଗେଜ କଲା? ତାଙ୍କ ଭିଲେଜର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ଏନଗେଜ କଲା। ରାଇଟ୍? କୋଉଠୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ? ଭିଲେଜ ଲୋୟର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ଓକେ, ଟାଇମ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ସେ? ଆଫ୍ଟରନୁନ। Among many strange phenomena wrought by the great spirit of the time was the composition of the song. ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଓପନିଂ ସଙ୍ଗ ଗାଇବ ତାର କମ୍ପୋଜିସନ କରାଗଲା। ସେ ସମୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର ମାହୋଲ, ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଆଉ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏସବୁକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୀତ ସେମାନେ କମ୍ପୋଜ କଲେ। ହେଲେ କିଏ କମ୍ପୋଜ କଲା? କମ୍ପୋଜର ହେଉଛି ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର, who had lived 67 years without any poetic activity. ସେ ଏବେକୁ 67 ଇୟର ହେଲା, ମଝିରେ ଆଉ କେବେ ପେନ୍ ଖାତା ଧରି ନଥିଲା। ଆଗେ ସେ ସେମିତି କମ୍ପୋଜ କରୁଥିଲା ପଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ବଟ୍ ଏ ମଝିରେ ତାକୁ କାମ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 67 ଇୟର୍ସ ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ଟୁ ମେକ୍ ଏନ୍ ଓପନିଂ ସଙ୍ଗ, ୱେଲକମ୍ ସଙ୍ଗ ଫର୍ ଦି ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି କମ୍ପୋଜର। କମ୍ପୋଜର ବୋଲେ କ'ଣ? ଗୀତରେ ଯିଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିବ, ନିଜେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାକୁ କମ୍ପୋଜ କରିବ, ତାକୁ କମ୍ପୋଜର କହିବେ। ତ ହୁ ଆର୍ ଦି କମ୍ପୋଜର ଦେନ୍? What was the poetic activity? Poetic activity ଟା କ'ଣ? Composition of the welcome song. The refrain ବୋଲେ repeat ହବାଟା, repetition. The refrain of the song still raise echo in me. It's literally translated would be ସେ ଗୀତ କ'ଣ? echo ବୋଲେ ସାଉଣ୍ଡ। ସେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗର ରିଦିମଟା ମୋ କାନରେ ଏବେ ବି ରିପିଟେଡଲି ବାଜୁଛି ବୋଲଛି, ଇକୋ ବୋଲେ ସାଉଣ୍ଡ। ସେ ସଙ୍ଗକୁ ସେ କେମିତି ସେଟ୍ କରୁଛି ଦେଖ। ସେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନଟା କା ଦେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଲେଖିବା ଟାଇମରେ ଲେଖିଛି, ଓ ମାଇଟି ମିନିଷ୍ଟର tell us how do you know this long and bordered universe। ବୋଲେ ଗୀତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୋଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ମହାନ ଗ୍ରେଟ୍, ତମେ କିଭଳି ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଚଲାଉଛ, ତମେ କିଭଳି ତମର କାମ, ବୋଲେ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମିନିଷ୍ଟରକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି। ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀଟା କେତେ ବଡ଼ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସଙ୍ଗ କ୍ୟାଟଲଗ୍ଡ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲା ପରେ ନେଚର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୟୁମାନିଟି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ଅନ୍ ଦ ଅକେଜନ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ କମିଂ। ଗୀତର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଗୀତର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଏକ ହାଇନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମିନିଷ୍ଟରର ବଡ଼ ବଡ଼ିମା ଲେଖା ହେବା ସହିତ, ଦୁଇରେ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନିଟି ବୋଲେ କ'ଣ? ମାନବିକତା। କାର? ମାନବିକତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲୋକ, ଆକୁ ଦର୍ଶେଇକିରି ସେ କ'ଣ କରିଛି? ବାକି ପଏମଟା ଲେଖିଛି। ପଏମର ହାଉ ଦି ସନ୍, ଏଇଟା ସବୁ ତାର ମ୍ୟାଟର, ସଙ୍ଗର ମ୍ୟାଟର। How the sun almost blew in romantic happiness that morning। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି ଗୀତରେ। How each and every bird recites a particular raga। Birds, raga means rhythm, how they produce the sound। And with the eagerness and throbbing of heart, the women flock waited to blow the conch shells। କନସେଲ୍ ବୋଲେ ଏସବୁ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କଲା ପରେ ଗାଁର ଭିଲେଜ ଓମେନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଡର ଦୁଇ ପାଖରେ ଜଗିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ହେଲେ ସେମାନେ କଞ୍ଚ ସେଲ୍ସ ଧରିକି ଜଗିଛନ୍ତି। କଞ୍ଚ ସେଲ୍ସ ବୋଲେ କ'ଣ? ଶଙ୍ଖ ବଜେଇକି ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ। when the minister stepped into the village, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପାଦ ଭିଲେଜରେ ପକେଇବ, means when he come। ତାପରେ ଦେଖ ମନୋଜ ଦାସ କହୁଛି, ଆଇ नो, ମନୁ ସାହୁକାର।
I know that nowadays ministers don't enjoy such glory. आजिकल रो मंत्री माननकु से प्रकार वेलकम करा जाऊ नाही. स्वाधीनता समय रे जिंती वेलकम करा जाउतला मंत्री माननकु सेटा गोटे बड़ अरेंजमेंट थिला. आज रो मंत्री माने कोबाटर आसुंत कोबाटर जाउतन सेटा मते जना पड़ले. किंतु से समय रे मंत्री मानक अरेंजमेंट बेले गोटे बैंड बाजा गोटे नाच ग्रुप आ विलेजर समस्त दुई साइड रोड छिड़ा के वेलकम कला भलिया ए सब अरेंजमेंट सब होइतिला. But it was very different then with the rustic children. Rustic बोले village area रो rural area रो गांवली लोक rustic बोले. Wrangled over several questions. जो पिला माने सेतोल को श्री महाराणा बड़ लोक थिला किंतु मनोज दास रो एज टिके कम थिला. ये पिला मन को गहली भितरे ये भी थिला. तो से गाँव रो पिला माने समस्त मंत्री आसीबा विषय भाबिकरी हजार प्रश्न तांको भितरे उठुची. मंत्री जेमति कि कोन करची, व्हाट डज द मिनिस्टर ईट, से कोन खाए, व्हाट डज ही थिंक, से कोन भाबुतबो गुटे मंत्री हेछि बेले, एंड डज ही स्लीप और नॉट, से सुए कि नो सुए ते बिजी लोको, डज ही एवर सफर फ्रॉम कोल्ड, से केबे कोन सी रोग ठंडा ज्वर इत्यादि द्वारा प्रभावित हुए कि. तो जो माने जगिचंती गाँव लोक मानकर गोटे मेंटालिटी कौन ए मंत्री रो विषय रे से माने बहुत किछि जानिबा पाइ बोल कि तांको मन रे प्रश्न उठे आछि. तो एबे सब कोन अछि सिचुएशन, मंत्री आसीबो, गाँ लोक माने चिल्ड्रेन माने ओमेन फ्लॉक ऑल आर वेटिंग ऑन द रोड टू रिसीव हिम. व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, कोन पाइ से आसीबो, ए पब्लिक मीटिंग इज बीइंग अरेंज्ड. गोटे पब्लिक मीटिंग अरेंज करा जायछि. के से मंत्री के आसीबो, बाबू वीर किशोर. व्हाट वाज हिज पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बोले तार पदवी कोन थिला, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड फाइन आर्ट. आउ समस्त खुशी रे गोटे आनंदित मूड रे जगिचंती मंत्री को. श्री महाराणा हिमसेल्फ वाज हेक्टिकली एक्साइटेड. हेक्टिकली बोले तीन गुण अधिक एक्साइटेड आनंदित होइछि के श्री महाराणा. कहीं तार कामटा फुलफिल हो, सी इनवाइट करछि चीफ गेस्ट हिसाब रे वीर किशोर को. के इनवाइट करछि, महाराणा. तेणु सी सबुठो अधिक एक्साइटेड हैप्पी. हां एक्सट्रीमली यस. He used to sleep for a full hours in the afternoon. Actually से लोकटा आफ्टरनून रे सब बेले सुई पड़े के श्री महाराणा. But he gave up this habit. Last 10 days हला से सुईबाटा मुझे छाड़ देछि. Prior to the reception, ये रिसेप्शन पब्लिक रिसेप्शन आ मीटिंग रे से एते बिजी अछि जे खरा बेले सुईबाटा मुझे से भूल जाइछि. बोले से बहुत एक्साइटेड अछि बोली जाना पड़छ. एक्साइटेड बोले कोन, ओवरजॉय, एंजॉय माने खुशी. All is timed in examining, re-examining details of the arrangement. सब ताको से केमते पूरा बिजी ये जो रिसेप्शन कमिटी करछि ताइरे और काम सब ठीक है कि नहीं, ओपनिंग सॉन्ग वर्कआउट हो कि नहीं, अदर अरेंजमेंट स्टेज रो सब ठीक है कि नहीं, एग्जामिनिंग एंड री एग्जामिनिंग रे का तार टाइम बेसी बितौतला से. आफ्टरनून रे सुतला, आफ्टरनून रे सुईबाटा मध्ये छाड़ देछि. Yet he seemed nervously uncertain. एतिक सब अरेंजमेंट से कला बाद मध्य ता मन भितर गोटे संदेह, काले कौन बाकी रही जाइछि कि, काले कौन भूल हो जाइछि कि बोले से कौन होछि, नर्वस होछि. He was nervous and uncertain. Uncertain बोले कौन, एबे जाय भी श्योर है नहीं जे मोर सब अरेंजमेंट ठीक अछि तो बोले ऊपर ताको संदेह आछि. तो एनीवे आमे एबे कौन पढ़ले, ये जो लेसन रे आमे पढ़ले नंबर 1 पॉइंट, द एम ऑफ श्री महाराणा to become an MLA. Number 2, what steps he has taken. Organized a public meeting, reception committee गठन करके became the chairman, and arrangement to welcome the minister. A minister रो welcome पाई बोल के stage arrangement, welcome song, composition of song,
তারপরে আসলে how people are waiting to receive him. Still now the minister has not come. ଆଇଲା ପରେ କଣ ହବ ସେଟା ଦେଖିବା ଅଛି। ଏବେ ତମେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକୁ ମୁଁ ବେସ୍ କରିକି ଦଉଛି ଦେଖ। ହଉ ଏଟା ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଆ ଭିତରୁ। Only Sonu, hi.